Jai Hind everyone. This is Sheetal Vyas and I welcome you all on my channel Learning with Sheetal Vyas. Friends, today we are going to start a beautiful topic of English that is commonly confusing words in English language and the correct uses. And we are going to start our journey with it. Yes, this is very simple word in the language, that is it, and the confusing words are its. So let us explore the knowledge with it. At first we will try to find out what are confusing words. Some words in English cause trouble for speakers and writers because these words have a similar pronunciation, meaning or spelling. These are called commonly confusing words. The words which have a similar pronunciation means their sound is similar, their meaning is similar, and sometimes even the spelling is also similar. These are called commonly confusing words, and speakers and writers both are facing trouble whenever they have to use the proper and correct word. For example, he said no to me. It means he denied to me. And the other sentence is he does not know me. Please pay attention for this word no. He said no to me. He denied to me. He does not know me means he is not familiar with me. फर्स्ट सेंटेंस में ही सेड नो टू मी का मतलब है उसने मुझे मना कर दिया. नो मीन्स डिनाई, मना करना. सेकेंड सेंटेंस ही डज नॉट नो मी, यहाँ पर नो का मतलब है ही इज नॉट फैमिलियर विथ मी, वो मुझे नहीं जानता. बट एज यू हैव सीन द स्पेलिंग इज डिफरेंट. NO नो एंड KNOW नो. बट इन दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है, इन दोनों का जो साउंड है वो सिमिलर है, हालांकि मीनिंग और स्पेलिंग दोनों ही अलग हैं. जिस वक्त हम बोल रहे होते हैं, यानी whenever we are speaking, that time maybe we will not face any problem because no and no both are having the similar pronunciation. But when it is time to write, that time we will face the problem if we are not aware about the correct word and its meaning. Let us see some other example. She bought a new dress. She bought a new dress. New is an adjective. उसने एक नया ड्रेस खरीदा. And the second is she knew it very well. Here knew is past form of know. Again, just pay attention to this word NEW knew and KNEW knew. दोनों का जो प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है, लेकिन दोनों का मीनिंग अलग अलग है. हियर न्यू का मतलब है नई ड्रेस. न्यू मीन्स नया, विच इज नॉट ओल्ड. एंड हियर KNEW न्यू मीन्स किसी को जानना या किसी की जानकारी होना. शी न्यू इट वेरी वेल, उसे इस बात का की पूरी जानकारी है. सो बोथ आर डिफरेंट इन मीनिंग, different in spelling, but similar in pronunciation. These words may look alike or sound alike. Their meanings are very different. हमने देखा कि ये दिखते भी एक जैसे हैं, न्यू न्यू, बोलने में भी एक जैसे हैं, लेकिन इनका मीनिंग जो है वो एकदम डिफरेंट है. For a good writer, it is important to understand about the proper meaning and uses. और अगर आपको एक अच्छा राइटर बनना है, सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट वॉट इज़ द प्रॉपर वर्ड टू बी यूज्ड. It leaves a positive impression on the readers if a writer choose the words correctly. अगर एक राइटर किसी भी शब्द को, किसी भी वर्ड को प्रॉपरली सेलेक्ट करता है, प्रॉपरली चूज करता है और फिर उसको अपनी राइटिंग में यूज करता है, तो ये एक पॉजिटिव इम्प्रेशन छोड़ती है रीडर्स पे, यानी रीडर्स ऐसी राइटिंग्स को पढ़ना पसंद करते हैं.
So it is very important to find out and determine the correct and proper use of the word. Let us know about it. I hope most of us are aware about it. But are you aware about the different use of it? If yes, then revise it. If no, then let us start the journey with me. It is a third person pronoun, commonly used as both a subject and an object. It जो है वो थर्ड पर्सन प्रोनाउन है, दैट वी आर ऑलरेडी अवेयर. कॉमनली इसका जो यूज होता है वो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के फॉर्म में होता है. In my some previous video of grammar, I already informed you about the third person pronoun, that is it. It is used as subject and object. We can use it as a subject or as an object. It is used for non-living animals, infants, etc. इट का जो यूज होता है वो हम नॉन लिविंग एनिमल्स और इन्फेंट्स के लिए भी करते हैं. देन इन्फेंट्स मीन्स बेबी और स्मॉल चाइल्ड. देन एग्जाम्पल, इट इज माई पेन, यह मेरा पेन है. इट इज माई पेट डॉग, यह मेरा पेट डॉग है. दिस इज वेरी क्यूट बेबी, इट हैज ब्लू आईज. आई लाइक टू ड्रिंक मिल्क, इट गिव्स मी एनर्जी. I watched a movie. It was very interesting. You can see that here we have replaced noun with it. So it is used as a pronoun in these sentences. So the first use, that it is used as a person, as a third person pronoun. Now the second use. We also use it as an empty subject or object. It means when it does not refer to anything in particular. In some sentences, we are not going to tell specially or particularly about some subject, but still we use it. That's why it is called an empty subject or an empty object. Let us see this example. It is a bad habit to tell a lie. We can write this sentence in another form. To tell a lie is a bad habit. If you will compare both the sentence, then you will find that it has not replaced any word from this sentence. So, I can say that it does not refer to anything in particular. It is an empty subject in this sentence. Let us see some next example. It was last Monday when you saw me. We can write this sentence in this way. You saw me on last Monday. It was last Monday when you saw me. You saw me on last Monday. In both the sentences, you can see that it has not replaced any noun or any other pronoun. So, it is used as an empty subject. किसी भी पर्टिकुलर थिंग को रेफर नहीं किया. नेक्स्ट एग्जाम्पल, इट शुड बी एवरी चाइल्ड्स राइट टू गेट बेसिक एजुकेशन. हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं, टू गेट बेसिक एजुकेशन इज द राइट ऑफ एवरी चाइल्ड. Again, if you will compare both the sentence, then you will get that it does not refer to anything in particular. In all the above sentences, it does not mean or refer to a particular subject. Even in these sentences, it does not replace any noun, so it does not work as a normal pronoun. इसे हम नॉर्मल प्रोनाउन न कहकर एम्प्टी सब्जेक्ट कहेंगे. नाउ एज सम ऑब्जेक्ट, इट वर्क्स एज एन एम्प्टी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. जब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लेकिन वो कैसा है, एम्प्टी है, यानी पर्टिकुलरली किसी चीज को रेफर नहीं किया है. आई डोंट लाइक इट व्हेन यू डोंट कंप्लीट योर वर्क. शी यूज्ड टू गो आउट
when it is a good weather. एंड वी कैन से इंस्टेड, इन दोनों सेंटेंसेस को हम इस तरह भी लिख सकते थे. द फर्स्ट वन, आई डोंट लाइक व्हेन यू डोंट कंप्लीट योर वर्क. हियर यू कैन सी आई हैव ओमिटेड इट. मैंने इट को रिमूव कर दिया है, बट सेंटेंस के मीनिंग में कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि इट ने किसी को रिप्लेस नहीं किया था. इट ने किसी भी ऑब्जेक्ट को रिप्लेस नहीं किया था. दैट्स वाई यहाँ पर इट जो है एम्प्टी ऑब्जेक्ट की तरह काम करता है. और ये किसके लिए था? ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट था जो कि एम्प्टी था. आई डोंट लाइक इट, मैं किसे नहीं पसंद करता? इट को पसंद नहीं करता. लेकिन ये इट क्या है? ये है व्हेन यू डोंट कंप्लीट योर वर्क. एंड इन नेक्स्ट सेंटेंस, शी यूज्ड टू गो आउट व्हेन द वेदर इज गुड. हम इस सेंटेंस को ऐसे भी लिख सकते हैं दैट शी यूज्ड टू गो आउट व्हेन द वेदर इज गुड. इफ यू विल कंपेयर बोथ द सेंटेंस, देन यू विल फाइंड आउट कि इट ने किसी को भी रिप्लेस नहीं किया है, बट शी यूज्ड टू गो आउट व्हेन इट इज अ गुड वेदर में इट जो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की तरह वर्क कर रहा है, बट दैट इज एन एम्प्टी ऑब्जेक्ट जो किसी भी पर्टिकुलर किसी नाउन को रेफर नहीं कर रहा है. So, it does not refer to any particular object in the above sentences and works or function as an empty object. Now, let us see some different use of it. It is used as introductory subject to express weather or time. It का use और कब होता है? जब हम कभी sentences में वेदर या टाइम के लिए इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट की तरह उसको यूज़ करते हैं. मतलब जब हम वेदर या टाइम की बात कर रहे होते हैं तो हमें सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करने के लिए इट की ज़रूरत होती है. यहाँ पर हम इसको जब यूज़ करेंगे तब कोई पर्टिकुलर सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन हमें अपनी बात की शुरुआत करने के लिए, उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट का यूज़ किया है. जस्ट हैव अ लुक फॉर दिस एग्जाम्पल. It is cold outside. It will be rain today. It is a sunny day. It is 1:15. It will 1 o'clock when she will come. It was a hard time of life for Meena. In all the above sentences, we have just started the sentence with it so that we can introduce our expression. We can introduce the rest of the sentence. For example, in this, it is cold outside. हम क्या कहना चाहते हैं कि बाहर cold है, but just to introduce it, we have used it. So, in this way, you can see that it can be used as introductory subject whenever we are going to express weather or time. Now next, we use it as a dummy subject or object. For example, in some clauses whose format will be to plus infinitive or that. Infinitive का मतलब होता है base form of verb. इसके बारे में और जो है हम दूसरे किसी लेक्चर में या दूसरे किसी वीडियो में पढ़ेंगे. राइट नाउ यू जस्ट लर्न कि जब भी किसी क्लॉज का जो फॉर्मेट होता है वह टू प्लस इन्फिनिटिव या दैट होता है, तब इट का यूज एक डमी सब्जेक्ट या डमी ऑब्जेक्ट की तरह भी होता है. एक्चुअली डमी सब्जेक्ट और डमी ऑब्जेक्ट भी एम्प्टी सब्जेक्ट और एम्प्टी ऑब्जेक्ट की तरह ही वर्क करते हैं, बट इनमें जो खास बात है वो क्या है कि यहाँ पे जो क्लॉज है वो टू प्लस इन्फिनिटिव या दैट का फॉर्मेट है. सो द फर्स्ट एग्जाम्पल, इट वॉज नाइस टू टॉक विथ हर आफ्टर अ लॉन्ग टाइम. यहाँ पर इट एक डमी सब्जेक्ट की तरह यूज हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि कोई सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सेंटेंस को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमें एक डमी सब्जेक्ट की जरूरत थी. दैट्स व्हाई वी हैव यूज्ड इट. क्या अच्छा है, इट वाज नाइस. क्या अच्छा है कि उसके साथ बात करके मुझे, जब मैंने लंबे समय के बाद उससे बात की तो वह मुझे अच्छा लगा. इट इज अ नाइस मूवी टू वॉच. क्या नाइस है, यह मूवी नाइस है देखने के लिए. इट इज रूड नॉट टू से प्लीज. क्या रूड है
कि हम किसी को प्लीज ना कहें. Just similar to these above sentences, it is bad that you become careless. It is good that you are working hard. And the last example, it was quite necessary to tell her the truth. So in these sentences, it is used as a dummy subject. It is also used with some particular verbs like find, seem, consider, occur, happens, etc. इन सभी टर्म्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए भी हम इट का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आई फाउंड इट सरप्राइजिंग दैट शी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. यहाँ पर मुझे सरप्राइजिंग से स्टार्ट होने वाली ये जो पूरी फ्रेज है उसको इंट्रोड्यूस करना था. दैट्स वाई आई हैव यूज इट. आई फाउंड इट सरप्राइजिंग. एंड द नेक्स्ट क्लॉज इज दैट शी वॉज ऑल्सो प्रेजेंट देयर. यहाँ पर आपने क्या देखा कि सरप्राइज को इंट्रोड्यूस किया इट ने. नाउ द नेक्स्ट वन, इट सीम्स दैट यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन द अपकमिंग प्रोजेक्ट. अगेन it has introduced the word seems. She must admit that they will consider it offensive. So यहाँ पर it ने consider को introduce करने के लिए use किया. Then it often occurs in the mid of the night. हमने occur को introduce करने के लिए या often occur को introduce करने के लिए it का use किया. It often occurs in the mid of the night. And the last example, it usually happens with me. यहाँ पर हमने happens या usually happens को introduce करने के लिए it का use किया. यहाँ जो पिछले सेंटेंस थे उन सभी में हमने to plus infinitive का use देखा. For example, in first sentence, it was nice to talk. To plus infinitive. As I told you, infinitive का मतलब होता है base form of verb. Then that it is a nice movie to watch. Sorry, it is a nice movie to watch. Again, we have used to plus infinitive. To plus infinitive, to watch. Then the next sentence, it is rude not to say please. यहाँ पर हमने to plus say यानी to plus infinitive का use किया. In the next sentence, it is bad that you become केयरलेस. तो यहाँ पर हमने दैट का यूज किया, इसलिए इस सेंटेंस में भी हमने इट से इंट्रोड्यूस किया है एक डमी सब्जेक्ट की तरह. देन इट इज गुड दैट यू आर वर्किंग हार्ड. अगेन हमने दैट का यूज किया है इस क्लॉज में, इसीलिए हमने इट से इसको डमी सब्जेक्ट की तरह इंट्रोड्यूस किया है. सिमिलरली इन द लास्ट सेंटेंस, इट वॉज क्वाइट नेसेसरी टू टेल हर द ट्रूथ. टू टेल is to plus infinitive. So here we have seen that use of it. Again, we are going to check very interesting use of it. We use it in cleft sentences. Now, what is cleft sentences? That also we should learn. We use cleft sentences to connect what is already understood to what is new to the listener. क्या करते हैं हम क्लेफ्ट सेंटेंस में? क्लेफ्ट सेंटेंस में एक नोन बात को अननोन बात से जोड़ा जाता है. कुछ ऐसी बात जो ऑलरेडी लिसनर ने समझ ली है, ऑलरेडी अंडरस्टूड है, उसको हम उस नई इंफॉर्मेशन से जोड़ते हैं. इन अ क्लेफ्ट सेंटेंस, अ सिंगल मैसेज इज डिवाइडेड और स्प्लिट इनटू टू क्लॉज. क्लेफ्ट का मतलब होता है स्प्लिट करना या डिवाइड करना. तो क्लेफ्ट सेंटेंस में क्या होता है, एक सिंगल मैसेज जो होता है उसको टू क्लॉजेस में डिवाइड कर दिया जाता है. क्यों किया जाता है ऐसा? दिस अलाउज द लिसनर टू फोकस ऑन द न्यू इंफॉर्मेशन. ऐसा करने से जो लिसनर होते हैं वो किस पे फोकस करते हैं? न्यू इंफॉर्मेशन पे ज़्यादा फोकस करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इट वॉज हर सिस्टर हु प्रिपेयर्ड द केक. Now you can see already known fact is cake is prepared, and the new information, her sister prepared it. So what you have seen कि जो नई इंफॉर्मेशन है उसको इंट्रोड्यूस करने के लिए इट का यूज किया है. इट वॉज हर सिस्टर हु प्रिपेयर्ड द केक. एक अननोन बात को
नोन बात से जोड़ने के लिए इट का यूज किया है। नाउ द अदर एग्जाम्पल इज नो, इट वॉज नॉट माई कार विच मैट विथ एन एक्सीडेंट यस्टरडे। यहाँ पर ऑलरेडी नोन फैक्ट क्या है, दैट वन कार मैट विथ एन एक्सीडेंट। और नई इंफॉर्मेशन क्या है, दैट इट वॉज नॉट माई कार। तो नई इंफॉर्मेशन को या न्यू इंफॉर्मेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए हमने इट का यूज किया। और हम क्या चाहते थे कि जो लिसनर है वो इस बात पर फोकस करे कि हम न्यू इंफॉर्मेशन उसको क्या दे रहे हैं। दैट्स वाई वी हैव यूज इट इन दिस क्लेफ्ट सेंटेंस। वी यूज इट इन पैसिव ऑल्सो। इट मेक्स the sentence less personal and more objective. As we all are aware कि जब हम पैसिव सेंटेंस बनाते हैं तो हमारा ज़्यादा फोकस ऑब्जेक्ट की तरफ होता है, न कि सब्जेक्ट की तरफ। तो जब हम पैसिव में इट को यूज़ करते हैं तो क्यों करते हैं, ताकि सेंटेंस जो है वो ज़्यादा ऑब्जेक्टिव बने और लेस पर्सनल बने। लेट अस सी सम एग्जाम्पल। इट इज़ ऑलरेडी डिसाइडेड दैट वी विल गो फॉर अ वॉक एवरी नाइट। हियर यू कैन सी हु हैज़ डिसाइडेड, यह इम्पॉर्टेंट नहीं है क्योंकि यह पैसिव फॉर्म है, इसलिए किसने डिसाइड किया यह इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट है कि हम सभी को एवरी नाइट वॉक पर जाना है। तो इस तरह से इट की हेल्प से हमने इस पैसिव फॉर्म में किस पे फोकस किया, ऑब्जेक्टिव फॉर्म पे फोकस किया। यानी ये सेंटेंस पर्सनल नहीं बता रहा है, ये नहीं बता रहा है कि कौन सब्जेक्ट है जिसने डिसाइड किया, लेकिन ये बता रहा है कि हमने डिसाइड क्या किया कि हमें बाहर रोज जाना है। हमने या जिसने भी डिसाइड किया उसने ये डिसाइड किया कि हम रोज बाहर जाएंगे, हम रोज रात को घूमने जाएंगे। द नेक्स्ट इज इट इज सेड दैट द किंग हैड सम मैजिकल पावर्स। किसने कहा ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन किंग के पास मैजिकल पावर्स थी, ये इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट, इट इज नाउ नोन टू एवरीवन दैट द रॉबरी वॉज प्लान्ड बाय मिस्टर जोसेफ। अब ये जो नोन है, ये कौन है, कौन इसको जानता है, ये एवरीवन कौन है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन रॉबरी की प्लानिंग मिस्टर जोसेफ ने की थी, दैट इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर हमने इट का यूज पैसिव फॉर्म में किया है ताकि सब्जेक्ट लेस पर्सनल और मोर ऑब्जेक्टिव बन सके। एंड द लास्ट सेंटेंस इज फाइनली इट वॉज एक्सेप्टेड दैट गवर्नमेंट विल एनेक्ट द न्यू लॉ। अब किसने एक्सेप्ट किया है ये इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट नए लॉ को लागू करने वाली है, ये बात इम्पॉर्टेंट है। सो वी यूज इट इन पैसिव मोड ऑल्सो। So, in next lecture, we will try to find out the difference between it and its. But today, we learn so many different use of it. It can be used as simple third person pronoun. It can be used as empty subject and empty object. It can be used in different type of cleft sentences. It can be used in passive sentences or passive voice to make the sentences less personal and more objective. It can be used as dummy subject also, and in some clauses where to plus infinitive or use of that is there also we use it. So here we are going to conclude our today's lecture, and in our next lecture we will try to find out the difference between its with apostrophe and with its without apostrophe. Till then, have a nice day. Jai Hind everyone.